चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। पायरुविक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट आर द थ्री मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ पायरुविक एसिड अंडर एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन? राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द डायग्राम। जी बिल्कुल, अंडर एरोबिक कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O is formed. Under anaerobic conditions in our skeletal muscles, lactic acid is formed. Under anaerobic condition in yeast, ethyl alcohol plus carbon dioxide is produced. इसलिए ग्लूकोज से ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में NAD प्लस इन होकर NADH प्लस आयन आउट होकर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का और लैक्टिक एसिड और C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट केसेस, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया है। The energy yield in terms of ATP is higher in aerobic respiration than during anaerobic respiration. Why is there anaerobic respiration even in organisms that live in aerobic conditions like human beings and angiosperms? जी हाँ, एनएरोबिक respiration even in organisms that live in aerobic condition like human beings and angiosperms due to the oxygen deficiency. In our skeletal muscles during strenuous exercise, oxygen deficiency leads to anaerobic respiration. In germinating seeds, anaerobic respiration leads to release of energy for emerging the seedling from the soil. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एरोबिक respiration, but it enters the respiratory process at the end. Discuss. जी बिल्कुल, although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to terminal stage of the process. At the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. Oxygen acts as the final hydrogen acceptor. चलिए नेक्स्ट। रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग एंड एंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबोलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ए स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनसाइड लिविंग सेल। इन दिस स्टेटमेंट अबाउट रिस्पायरेशन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वन स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव breakdown to organic substances used as substrate. जी हाँ, फर्स्ट स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, all the energy contained in respiratory substrates is not released free into the cell or in a single step. It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. Second, organic substances used as substrate. The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrates. Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats, and even organic acid can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions.
Comment on this statement. Respiration is an energy producing process, but ATP is being used in some steps of the process. जी बिल्कुल, इन द respiration pathway there are some steps where energy is utilized for phosphorylation. For example, conversion of glucose to glucose 6-phosphate consume 1 ATP, but at the end of respiratory process many more ATP are produced.